ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। ये जो डिक्टेशन है ये 141 से लेकर के पिटमैन पॉकेट बुक की 141 से लेकर के 144 तक है। इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन जो लास्ट वाली वो कवर हुई है। बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आते हैं या जैसे आप पढ़ते हो तो आप लोग शुरू से ही एज ए ड्राइंग इसको सीखते हो, तो जिसके कारण जो है जब हम डिक्टेशनों में पहुंचते हैं, मैगज़ीन लिखते हैं, तो उसमें हमारा जो है क्या कहते हैं स्पीड के साथ लिख नहीं पाते। फिर क्या करते हैं बच्चे 50 की स्पीड से लिखते हैं पहले डिक्टेशनों को, फिर 60, फिर 70, फिर 80। इस तरह से नहीं करना होता। ये जो डिक्टेशन जब शुरू से ही जब पिटमैन पॉकेट बुक के अंदर जहाँ से डिक्टेशन स्टार्ट हो जाती है, सर्कल एस से, एस का सर्कल जहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रेजोग्राफी से असल में स्टार्ट हो जाती है। वहीं से आपको जो डिक्टेशन जो है रनिंग हैंड में लिखनी चाहिए। वहीं से जो डिक्टेशन की स्पीड 40 से स्टार्ट हो जाती है और इसी किताब के अंदर 100 तक पहुंच जानी चाहिए। जब ये किताब जैसे जैसे आगे डिक्टेशन बढ़ती है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो साथ साथ आपकी भी स्पीड आपको बढ़ानी होती है। फिर जिससे जो है हम जब मैगज़ीन लिखें, मैगज़ीन की कोई भी एक्सरसाइज लिखते हैं, तो हमारा रनिंग हैंड जो फ्लो में हाथ चलना चाहिए वो चलता रहेगा। अगर हम एज ए ड्राइंग हम बनाएंगे तो वो नहीं होता। तो अब जो भी जैसे बच्चा जिसके पास मोबाइल है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, ये ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज, ये नया जो है क्या कहते हैं ऐप बनाई है। इसके ऊपर आप पूरी की पूरी ये इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, पिटमैन पॉकेट बुक को बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक, तो इसमें कोर्स है आरपीसी के नाम से। एडमिशन सेक्शन में जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लो, आरपीसी पिटमैन पॉकेट कंप्लीट बुक, इस नाम से कोर्स मिल जाएगा इसके अंदर, पिटमैन पॉकेट कंप्लीट बुक। तो इसके माध्यम से आप पूरी की पूरी से इस किताब को पढ़ सकते हो और क्या कहते हैं अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ 141 से 144 तक, और ये वेबसाइट के ऊपर और ऐप के ऊपर दोनों जगह ये डिक्टेशन लगी हुई है। जिसके पास फ़ोन है वो फ़ोन से टाइप कर देगा, जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप से टाइप करेगा। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू methods of locomotion has considerably widened the field of the newspaper and added further variety to the editor's duties. Among the most popular modes of traveling is that of motoring, the development of which has been very remarkable indeed. Newspapers have consequently enlarged the scope of their contents and given circumstantial accounts of anything and everything of importance associated with motors and motoring. There are also periodicals devoted altogether to the interests of motorists. Interested parties organize motor shows at which everything in the way of accessories from incandescent lights to the most insignificant but nevertheless necessary parts are exhibited, each and everyone claiming to have certain distinctive features. The multiplicity of motors, both public and private, is a source of danger to the general public, for some motorists are unprincipled enough to be reckless in their driving. Such unlawful acts give offense and cause great alarm and inconvenience to those passing along our streets. Therefore, it is urgent that those in authority should seek an enlargement of their powers to check excessive speed whenever motors travel through the busy thoroughfare of our cities and towns, and to inflict severer punishments on all
who transgress or attempt to transgress the letter of the law. Dear Sir, my committee have considered your communication of the 12th institution drawing attention to several matters relating to the denominational schools in your district. The enlargement of the Cross Street School received special consideration, and my committee are of the opinion that something should be done immediately in this direction. To enlarge them again as they were enlarged 10 years ago seems to be necessary, and it is hoped to commence building operations during the coming summer. And to save time, my committee purpose giving the contract to the original builder of the schools. As the whole of the lightening of the schools requires overhauling, my committee have arranged for a report on the matter, and as the incandescence of the mentals in the offices here is very satisfactory, it is probable that similar incandescent lights will be fitted throughout. Notwithstanding your remarks, my committee think there will be no unfairness to the voluntary schools of the districts owing to the recent circular coming into force in the autumn, and are of the opinion that nothing should be done to hinder its working. Some say motorists should show more consideration and give attention to matters which concern the life and death of the frequenters of our roads. Though the difficulties are great, they are not irremovable, and motorists themselves can do a great deal to make them removable. Often, too, we hear complaints by denominational bodies that weekend motoring is injurious to the cause of religion in general, and there would be a general rejoicing among the churches if something could be done to convince people of their folly in spending their weekends motoring along the countryside. In our remarks respecting the onward march of civilization, it is well to consider all things together, and what brings misfortune to the few may carry with it great blessings for the majority of mankind. Notwithstanding this, however, there does appear to be a wanton heedlessness of those things which were very real and dear to the hearts of our forefathers. Dear Sir, I thank you for your circumstantial account of the centenary celebrations in your town, the reporting and sending of which show much consideration on your part. Whenever I can help you in similar circumstances, I shall be only too pleased to do so. It is remarkable that such as insignificant matter as the one you mention should give offense in newspaper circles. One would have thought that its very insignificance would have been sufficient to ensure its acceptance. Certainly, it is difficult to understand how anything
of the kind could be described as unprincipled and unmannerly. It is a misfortune that such a quibble should be raised, and I hope that everything will be done to save any inconvenience to those interested in the press. Nevertheless, I do not think the cause is irremovable, but rather altogether removable, and I shall be thankful whatever is done to bring the parties together again. Yours truly. इसको पहले अच्छे से लिखेंगे। अच्छे से लिखने के बाद अगर कोई वर्ड आपको नहीं आता है, पहले उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसको फाइनल लिखें और फिर इसको टाइप भी कर दें। ये वेबसाइट के ऊपर और मोबाइल ऐप के ऊपर दोनों जगह ये ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर में लगा रखी है। इस क्लास में इतना ही बच्चों। नमस्कार बच्चों।